ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੱਟੀ। ਦੋਸਤੋ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋਈਏ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਹੋਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਾਈਗਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਰੀਅਲਟਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਇਨਸਾਈਡ ਆਊਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਸਕੇ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਏ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੀ ਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਲ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮਿਸਟਰ ਸੰਦੀਪ ਦਵਿਵੇਦੀ। ਮਿਸਟਰ ਸੰਦੀਪ ਦਵਿਵੇਦੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰੀਅਲਟਰ ਨੇ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਬ੍ਰੋਕਰ ਤੇ ਓਨਰ ਨੇ ਰੀਅਲ ਬਿਜ਼ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ। ਰੀਅਲ ਬਿਜ਼ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਸ ਦੇ ਇਹ ਓਨਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਕੋਈ 1-2 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕੌਂਡੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਸੈਂਕੜੇ ਕੌਂਡੋ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕਲਾਇੰਟ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡੀਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਡੀਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਡਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਵੈਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ ਏਜੰਟ ਫਰੋਮ ਰੀਮੈਕਸ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਟੌਪ 10 ਸੇਲਸ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਾਈਂਡ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਆਓ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਸਟਰ संदीप द्विवेदी जी, स्वागत है तुहाडा, तुसी साडे नाल हो। थैंक यू अमृत जी। आपके सभी श्रोताओं को और दर्शकों को नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल जी, एंड थैंक यू फॉर सेइंग सच काइंड एंड प्लेजेंट वर्ड्स अबाउट मी। ਮਿਸਟਰ ਦਵਿਵੇਦੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ, ਚਲੋ ਦੈਟਸ ਓਕੇ। ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਓ ਪਲੀਜ਼। तो अमृत जी, मेरे साथ मेरे बहुत माय बेस्ट फ्रेंड और यहाँ के एक नामचीन कंपनी कॉर्नरस्टोन मार्केटिंग के जो को फाउंडर हैं, शैब रजब ज़दे हैं मेरे साथ। एंड शैब जो है, थोड़ा सा मैं इनका तारुफ कराना चाहूँगा जी। शैब का ओवर 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट बिजनेस, और इन्होंने अभी तक बिलियंस ऑफ डॉलर्स की प्रॉपर्टीज सेल की हुई हैं। और इस समय जो ये मेरे साथ हैं वो एक बहुत ख़ास मकसद के लिए हैं, क्योंकि एक हम बहुत बेहतरीन और बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट डिस्कस करने जाएंगे नेक्स्ट 10-15 मिनट्स में। और शायद आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। आप दोनों ने रियल एस्टेट करना ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਬੋਥ ਲੁੱਕ ਕੁਆਇਟ ਯੰਗ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਲਾਈਕ ਯੂ ਸਟਾਰਟਡ ਯੂਰ ਬਿਜ਼ਨਸ व्हेन यू गाइस वर अराउंड 10 years old? So इसका आंसर मैं ये देना चाहूँगा कि we were pretty young when we started. We come from a background wherein business is in our family. तो उसमें ये है कि we started real estate pretty young. शैब जो है, शैब भी उसी तरीके के बैकग्राउंड से आते हैं और हमारा इंटरेस्ट बहुत है रियल एस्टेट में।
और रियल एस्टेट को हम जो करते हैं वो पैशन के साथ करते हैं। देखिए कोई भी बिजनेस जब आप करते हैं उसमें पैशन का इन्वॉल्वमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत जरूरी है। सो लाइक हम लोग बहुत टाइम स्पेंड करते हैं टू नो थिंग्स, बिकॉज आई नो नॉलेज इज पावर, और एक्सपीरियंस उसके साथ अगर जुड़ता है तो वो और अमेजिंग एक कॉम्बिनेशन हो जाता है। So That's perfect. Shab is an amazing combination. शैब के पास मुझसे भी ज़्यादा इंसाइट है, क्योंकि ये शैब का जो उठना बैठना है, जो लिंक है, वो मेरे से सेकेंड लेवल पे है। शैब का जो इंटरेक्शन है वो नामचीन बिल्डर्स, जिनके बारे में शैब बताएंगे आपको। तो जैसे ये प्रोजेक्ट हम करने जा रहे हैं, ये मैंकीज डेवलपमेंट्स का है। अगर कोई भी गूगल करके देखेगा मैंकीज डेवलपमेंट्स, they are number one builder in Canada when it comes to high-rise buildings. और जब शैब आपसे डिस्कस करेंगे ये जो हम प्रोजेक्ट लेकर आए हैं इस वक्त, तब आपको पता चलेगा कि क्या मैग्नीट्यूड का काम करते हैं लोग। तो शैब का इंटरेक्शन इस लेवल का है, बड़े बड़े बिल्डर्स के साथ इनका इंटरेक्शन होता है, तो ही नोज मच मोर देन आई नो। मैं फील्ड में ज्यादा रहता हूँ, मैं इनसे ज्यादा सीखता हूँ, और वो फिर आप अपने लोगों से शेयर करता हूँ। So it's a good thing, and I really appreciate Shab to come here today and share a lot more insight about the project. So I would like you to now basically get Shab involved. so he because we are so eager right now. We are so. That's right. Like, look outside right now. This presentation center where we are sitting. It is amazing. We are so excited about this project. Very good. So I would like to pass on this excitement to Shab. One more thing I would like to mention here, that he's been kind and gracious enough, because he has been doing back-to-back presentations for the last 4 days. You won't believe the agents. Yes, all the agents in Toronto has been coming to his events, and he is like talking continuously. So hats off to him. To come and help us with this interview. That's perfect. Mr. Razab Zadeh, swagat hai ji twada. Welcome to the show. Thank you very much, Amrit and Sandeep. From what I can understand, I think you were saying nice things about me. So thank you. Truly excited to be on your show, Amrit. You guys do a wonderful job. Truly an exciting time for us as a company. I started Cornerstone Marketing Realty years and years ago with my partner, and we cover up anything between 15 to 20% of Greater Toronto area sales and marketing business and high-rise development business. And today we're very excited to talk about a project called Festival Towers. Now, so you have a new project called Festival Towers. Yes. Wow, just tell us about your new project. Well, it's exciting for us because this is about 160 acres of development, and it's really big. Yeah, it's actually very large. It's 160 acres. It's बहुत बड़ा है. Yeah, so we're looking around 30 high-rise buildings alone, with a combination of parks, schools, just activity. The concept behind this development is really what we refer to as a master plan community. And what we're looking at doing is, we actually think it's very different, whereby we actually have a vision for an area in Toronto, is referred to as Vaughan, which is the fastest growing city in Ontario right now, not in Canada. And it's only mainly because the municipal level government, the provincial level government, and the federal government have contributed an extensive amount of tax dollars into this neighborhood to build infrastructure, where we have 5 various transportation modes, but around the infrastructure of a subway station. So, I mean, this is really interesting because, as you know, we, Canada only about 35 million people. Ontario, where we are at, we got around 16 million people, just just under 50% of the population. But it's phenomenal, the growth we're seeing here. But it's not just because people are buying here and it's stable and the jobs are strong and what have you, but it's really because the infrastructure is growing. And what we're seeing in our neighborhood is the first time we have seen a subway crossing the city Toronto core to a different municipality in 50 years.
So Very this will good be the job. first Yeah. subway. So when your project is going to start, and what do you think, how long it will take to finish the project? Excellent questions, Emily. Well, we're starting today. I mean, Sandeep had to chase me down, had a chance to, we're blessed to be on your beautiful show, to sit down and kind of share some of that insight with the rest of your viewership to understand what's happening in Vaughan Metropolitan Center. So we're going to be starting next week or 2 weeks to start selling this project. We're only releasing 2 towers, and these are the main 2 towers that is really the major landmark of this neighborhood. This metropolitan that really acts as the spine for this development because everything connects to it and is a short steps, I'd call it 100 to 200 steps away from the subway station. So it's really the prime location we're starting with as the first building. So we're truly excited again to unveil this project in the coming days and weeks. That's perfect. Mr. Dwivedi, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਤਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੌਂਡੋਸ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੌਂਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ। Excellent question. So before we venture into this question, I just want to say one more thing. जी। मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि ये जो शैप बता रहे हैं, this is what we call it as city within a city. और city within a city. Wow. Okay. Yes, वो कॉन्सेप्ट है हमारा। और दूसरी बात ये है कि हर जगह के लिए कोई ना कोई लैंडमार्क होता है। तो जैसे आपके लिए टोरंटो में CN टावर है। So what I am saying is that this building, this will be the signature building, and Vaughan will be known by this building. It will be called Festival Towers. Perfect. So it's that name. So you can understand the magnitude of the project that we are doing. Right. So coming back to your question कि लोग घरों से कॉन्डोज में क्यों मूव हो रहे हैं, अमित जी उसके 2-3 रीजंस हैं। पहली बात तो ये है कि प्राइस फैक्टर इज अ बिग थिंग, और जो मिलेनियल्स हैं, जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं, because the house pricing here is very high right now, like average price in Toronto is around $1 million for a house. तो उनके पास और कोई जगह नहीं है, तो then they are looking for these condominiums, और condominiums उनके बजट में भी आते हैं and they are close to work now. यहाँ पर क्या है कि the biggest USP is that this is a transit hub. जो आपको शहर ने बताया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ we don't even only have TTC. We have all the metropolitan, like we call it as the VMC, and we are in the South VMC section. So we have all the big transit hub. We have GO station here. We have Viva, YRT. So ये एक ऐसा central location है, यहाँ से कहीं भी आप टोरंटो के अंदर GTA में within 40 minutes travel कर सकते हैं. So the transit plays a bigger role when you buy condominiums. So होता है, और हमारे vicinity में बहुत top brand employers हैं. We have Vaughan Mills का Vaughan का biggest mall, maybe I would say Ontario का biggest mall, it's called Vaughan Mills Mall. यहाँ से आपका वंडरलैंड भी बहुत करीब है, जो कि it's like an amusement park here, big park. So क्या है कि all these things, perfect location. जी, it's location, और यहाँ पर location, right. जी, ये real estate is all about location. That's right. And what I'm saying कि जो young लोग हैं, हमारे साथ में यॉर्क यूनिवर्सिटी भी है। यॉर्क यूनिवर्सिटी यहाँ की one of the biggest universities है। Almost 100,000 students हैं यहाँ पर, over 7,000 employees हैं यहाँ पर, तो उनको रहने के लिए जगह, and that is like one stop away from us. So it's a great location. और यहाँ पर क्या है कि जो मिलेनियल्स हैं, जो यंग लोग हैं, जो बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं, KPMG, PricewaterhouseCoopers, those kind of businesses are already set up here. Caterpillar, like these are like top 100 companies, blue chip companies of the world. So they are already here, and all these employees are high in net worth income people, and they want to live in a place close to their work, and they also want to have a place like just say Festival Towers, 165 acres की कम्युनिटी है यहाँ पर। शायद आपको और बताएंगे, हमारे पास इसमें 17 किलोमीटर का रनिंग ट्रेल है,
हमारे या पास लाइक इट इज मैं उसी अमेजिंग। बात पे आ रही हूँ कि इसमें जी फैसिलिटीज क्या क्या हैं, लाइक क्या क्या इसके साथ, जैसे आप कॉन्डोमिनियम्स बाय करते हैं या उसमें घर बाय जी करते हैं तो साथ में क्या जी मिलेगा आपको? कोई वहाँ पे पार्क बना हुआ है, वहाँ पे जिम बना हुआ है, क्या क्या चीज़ है उसमें, फैसिलिटीज क्या है? श्योर। सो इसका आंसर मैं शैब को बोलूंगा आपको देने जी। के लिए, बिकॉज शैब नोज मच मोर देन मी। सो शैब, व्हाट अमृत जी इज आस्किंग इज व्हाट काइंड ऑफ फैसिलिटीज वी हैव, व्हाट काइंड ऑफ like amazing amenities in the building. Yeah, That's right. absolutely. Again, we do say this is one of the largest, if not the largest, development in all of Canada, and one of the most prime locations that's funded and is backed by the government in a sense. We have amenities works in two forms in high-rise developments. One is within the building, and one is exterior of the building. What is Okay. happening surrounding? Which, with this emerging market nowadays, you're not really seeing developers pay as much attention to the outside of what's Right. happening in your neighborhood. So the reason why we use the language master plan community is because we want to let people know there's a thought and there's a vision to what we're doing. The focus of this development is not just securing a location next to a subway station, but is to bring arts, culture, and entertainment to the neighborhood, where you don't have to leave the neighborhood, but you attract people to your neighborhood and increases value and desirability to the neighborhood. The outdoor amenity concept for this development is immense. It's virtually impossible to talk about it in a matter of 5 minutes, but the key things are we're going to be having around 40 to 50 acres of parkland surrounding our development, with one 40 focus to on 50 acres. acres of just, so out of that, think of this, out of that 160 acres of land, Right. 40 to 50 of it would be trails and parks That's alone. beautiful. Yeah. Absolutely, absolutely. And I think if anybody has the time to speak to Sandeep and his team, they're able to share some of the videos and some of the renderings and some of the concepts we have to kind Right. of help convey this image and this thought. So along with the infrastructure there, along with this massive parklands, what we're creating is various facilities in the area, from hockey rinks to soccer fields to a beach volleyball area to a school, right? That is extremely critical for neighborhood sustainability. Right? So That's we're right. thinking about these elements, and we're also taking parts of the neighborhood and allocating a pond to it, where families can kayak, enjoy the neighborhood, what it has to offer. So you really get that suburban feel, but in a metropolitan benefit and You know infrastructure what? setup. I am excited to look at it now. I have a feeling that I should sit in a plane and go to Toronto and look at it. Oh my God, it's beautiful. The way Absolutely. you So are we are explaining, very about it. yeah. Absolutely. So that's just parts of the exterior of the building in terms of what's happening, amenities, and we're truly excited. And Sandeep, I think, alluded to that within this whole 40 to 50 acres of parkland. What the builder is doing is, which is Mancus Developments, which I'll touch on in a moment a bit more. They're actually building a 17 to 18 kilometer trail, what we refer to as the multi-use path, whereby families or those that are in a healthy, active lifestyle are able to utilize this space and just get lost within your own neighborhood and go on a trail and go for a nice walk or go for a bike ride. And it's really effective because it weaves through the buildings, it weaves through the neighborhoods, it weaves through the parks, it weaves through the pond. It's really interactive and immersive experience. And it's the first time we've seen it in my 20 year career. It's my first time really being involved on a project of this capacity, where we're looking about 30 buildings. We're looking around a $40 billion development by real estate overall. So that is just the exterior of the project, really seeing what's at the You front know of the what? building. At this point, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. All the vacation amenities are here. ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. But ਹੁਣ my next question is, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, they want to look at it. ਕੋਈ open house ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੋਈ open house लगा के इन्हों दिखाओगे पहला? जी सो अमृत जी बिल्कुल श्योर। अमृत जी हम क्या कर रहे हैं कि नॉट ओनली वी आर डूइंग ओपन हाउस, वी हैव द बिल्डर हैज बिल्ट दिस अमेजिंग फैसिलिटी हियर कि हमारे क्लाइंट्स आकर देख सकते हैं कि क्या होने जा रहा है यहाँ पर। अच्छा। सो जी बिल्कुल। और कब होएगा? इसमें हम लोग ओपन हाउस वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, और हमारा थ्रू आउट द मंथ, because this is a big project, we have roughly around 1300 units.
थ्रू आउट द मंथ हम यहाँ पर रहेंगे बिल्कुल। आप जो भी हमें कांटेक्ट करेगा दे कैन बुक एन अपॉइंटमेंट एंड कम एंड मीट अस। और इसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगा कि इस समय आपका मेरे से कनेक्ट करना ज़रूरी क्यों है। पहली बात तो ये है कि आपको एक तो प्रोडक्ट की नॉलेज मिलेगी। दूसरा क्या है कि जब भी आप प्री कंस्ट्रक्शन में कोई चीज़ बाय करते हैं तो उसमें डे वन प्राइसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो लोग फर्स्ट बायर्स होते हैं, फर्स्ट लॉट ऑफ द बायर्स होते हैं, वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट करते हैं। जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, अभी हम जो इस एरिया में स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है, it's in the first 25% or first 10-15% of the development stage। तो आप सोचिए कि जब 100% ये होगा और आज अगर आप डेवलप करते हो, जैसे शैब ने बताया कि 10 years डाउन द लाइन हम जब इस इन्वेस्टमेंट को देखेंगे तो हम कहेंगे हमने बहुत कमाल का इन्वेस्टमेंट किया था। फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, यंग जनरेशन जो अपने फर्स्ट होम बाय करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि प्री कंस्ट्रक्शन में एक और बहुत अच्छी खूबी है कि आपको जो डाउन पेमेंट भी है ना वो आहिस्ता आहिस्ता देना होता है। तो इस प्रोजेक्ट में आज शैब अनवेल करने वाले हैं फ्लोर प्लान्स। Shab is going to unveil all these deposit structures. I'm requesting him to be good at it, you know, so that we can. Oh my God, that's good. That's Absolutely very no good. pressure at all. Absolutely no That's pressure very at all. good. But my last question will be, what will be the price then? Well, maybe I'll take on that challenge. And before I do want to say something that you may be familiar Please. with. So the developer here is Mankis Developments, which is one of the largest developers in all of Canada. We approximately represent $1 billion of sales for their company a year. Right. But the partner that owns the land, Amenity, which is really interesting to you, is that they're from Vancouver. BCI, they actually Okay. manage the BCI pensions. Quad Rail is the partner on it, which manages some of the pension funds from your community in your area in Vancouver. So they're actually redirecting money to Toronto because they're seeing a lot of opportunity overall, and mainly in the Vaughan Metropolitan Centre. And I think that's really important to understand. Now, That's with respect right. to pricing, we're really coming aggressively, and I think it's really important for people to know. We do have a lot to sell, so you tend to take a bit of an aggressive approach on pricing to make sure it's affordable for everybody that wants to be involved in it. So we would be starting somewhere in the high $400,000 range and up to 1.5 million, depending, you know, if you buy a penthouse or a 2-bedroom or 1 bedroom or 1 bedroom then with 1 bath or 1 bedroom then 2 That baths. is very reasonable for this beautiful community and beautiful place with 40 acres of like green space. Absolutely, you got it. Wow. Yeah. ਵਾਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਂਡ ਇਟਸ ਹਿਊਜ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਵਲ ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ? सो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा ओपन हाउस हो रहा है। अमृत जी जो टोरंटो से वाकिफ़ हैं, वॉन से वाकिफ़ हैं, मेरा जो ओपन हाउस होने जा रहा है वो है रेजिडेंस इन बाय मैरियट। हम यहाँ पर 12 से लेके 5 बजे तक हम यहाँ एवरी डे रहेंगे टू द एंड ऑफ द मंथ। यहाँ पर आप हमसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और इसका अगर आप लैंडमार्क देखें तो कोई भी सभी लोग जानते हैं वॉन का आइकिया, उसके साथ ही हमारा ये होटल है जहाँ पर हम रहने वाले हैं between 12 to 5 p.m. every day. And you can call me on my cell phone. My cell number is very simple. It's 647-964-2000. And you can book your appointments. मेरी टीम यहाँ पर आपको बिल्कुल हाथों हाथ लेगी. And we do have refreshments and everything. So you can come down and see. और जाते जाते मैं यही कहूँगा कि एक बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट है ये। लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटीज़ हैं और ऐसे प्रोजेक्ट बहुत कम आते हैं। तो डोंट मिस दिस बोट and part of history. Basically this will be history making, so part of that Very good. you can become part of that. So I will hand it over to Shab if you want to say something at the end. So Shab, what do you want to say about your project? How are you feeling after like finishing this project? It's still going on, but how do you feel? Well, I feel really good about it. We've had a very strong start to the market for the fall market, and we've chosen to release the biggest project in all of Canada in September, mainly because we think there is an opportunity, but also we want to make sure we satisfy the local residences that want to purchase in this project. There's a very big demand and a growing demand.
within the Greater Toronto area. And we want to be in the market also to just see how they can be compared to other projects to see where the value really lies. And I think any local person understands how critical this piece of development is for the Greater Toronto area. And I think that's really important for us. So we're really excited about it. And if it wasn't for regulations and having safety measures in place, the lineup in this location would be out the door with thousands of people waiting outside. Perfect. That's very good. And I wish you guys all the best. Thank you. Yes. Thank you. Thank you so much. Thank you so much for your time. Thank you very much. Thank you. ਦੋਸਤੋ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਮਿਲੇਨੀਅਲਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਓਕੇ, but I have a 5-6 bedroom house with the basement, with upstairs, with this, with that. Okay, well, I'm not married and I don't want to get married, so I need a little bit smaller place. Okay, but we have a big backyard. Okay, but I just have one dog. Then ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਸਭ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਿਲੇਨੀਅਲਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਨੀਅਲਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ੈਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੇ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर ਸਮਾਲਰ ਪਲੇਸਿਸ ਬਟ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਪਲੇਸਿਸ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਟੀਵਲ ਟਾਵਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਅ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ। 40 acres of green land with beautiful towers. ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ। ਵੈਲ, ਇਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹੋਸਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਇੰਜੋਏ ਯੂਰ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਦੋਸਤੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।